Whether you can write this question in the meanwhile. Should I do it or do you want to try? Yes, tell me. Guys, you want to try this or should I do? Yes, Rishita, We'll try, sir. you will try. Mm. Please write this question and try this, Amna. Once you're done, you will send the answer on my WhatsApp. Sure. By the way, raise your hand if you have started it. If you understand how to do this question, please raise your hand. If you have started doing this, okay, I'm not started. Khadija, Rishita. So Rishita, you have not started yet. I have, sir, but I don't know if I understand how to do this. Okay, fine. So let me tell you guys a bit. Uske baad you can solve it, huh? So what is the Kc for the following reaction? So how will you write Kc? Tell me. Kc will be for this reaction, Rishita. What would be the Kc? We have done this, na? What will be the expression? Yes, Rishita. Concentration of product upon reactant, ना भूल गए आप लोग. SO3 squared divided by SO2 squared multiplied by O2. ठीक है, reactants upon products. अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे अब आपको here you just need to plug in the values. They have given the equilibrium concentration of SO2 is 0.6, O2 is 0.82, and SO3 is 1.9. Just plug in the values and then you have to calculate it. ठीक है? Okay, I'm going to give you guys like 3 more minutes.
After that, you will send me whatever you have done. Done, sir. Then, Anjal, do you have sent the answer? Yes, sir. Okay. Just let me check. ओ, कैलकुलेटर से कर लिया आपने? हाँ, यस, आमना, Yes, sir. कैलकुलेटर से कर लिया आपने? No. अच्छा, यू मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड एवरीथिंग, ठीक है, Yes. चलिए, लेट्स राइट। आई विल बस वहां पे एक ना यूनिट्स का थोड़ा सा, यूनिट्स वहां पे आएगा, ठीक है, देयर विल बी वन यूनिट, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन, यू डोंट हैव टू वरी, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी करेक्ट आंसर, रॉन्ग नहीं कोई Okay, sir. करेगा, ठीक है, ये एक डिटेल है बस। टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। So the concentration of SO3 has been, ये अभी नहीं हो रहा था क्या रिशिता? Now you can do it ना? Yes, sir. I got the answer. How much did you get? Yes, Rishita, how much did you get? So I got 3, like almost 3, 2.9. नहीं, ज़्यादा होगा। खैर 1.9 molar and I hope you have done square here. Divide by Yes. SO2 concentration is 0.6 molar squared and the concentration of O2 is 0.82 molar. No, please see. 1.9 square divided by, अच्छा ऐसे इसको लिख सकते हैं, 1.9 into 1.9 into molar square divided by 0.6 into 0.6 into molar square into 0.82 molar. So molar square will cancel each other out, or the unit that you will be getting for Kc will be equal to molar inverse. ठीक, now let us see how to do this. कैसे करें? We can do something like बढ़ा के इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है. If I approximate this 1.9 as 1.8, then I can cancel this by 3, ठीक है, 3 and this is 0.82. Now since I have, ऊपर हमने थोड़ा सा कम किया है, नीचे भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं ना, 1.9 को 1.8 अज्यूम किया था, सो आई विल बी अज्यूमिंग दिस 0.82 as 0.8 है ना. सो आपके पास 3 3 9,
डिवाइड बाई 0.8 आ गया. So we can write this as 90 upon 8 approximately. So कितना आ जाएगा आंसर? Calculator. I mean, we can do this, but still 90 divided by 8 थोड़ा कम आ रहा है, 11.25 आ रहा है. It's a bit low, but I mean, when you do exact calculation, the answer is going to be 12.22 or 23, something like that. ठीक है? If you do the exact calculation. बाकी आपने कैसे किया calculation? Let me not do this approximation. The approximation is not giving us correct answer. 90 by 8 ना, 90 by 8 ही होता, हाँ ठीक है. By the way, the answer is going to be, let me 1.9 into 1.9 divide by 0.6 into 0.6 into 0.82. This is 12.23 molar inverse. ठीक है, this will be the answer. कुछ गलती किया है आपने Rishita, as you can see, like even after a bit of approximation, है ना, हमारे पास 10 से ज्यादा आ रहा है आंसर. ठीक है. Look at the next question. I will be doing this particular question. You don't have to do it. This is this type of questions you will be getting in the examinations, और इस चैप्टर में इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, है ना. सवाल को अच्छी तरह से समझेंगे. They're saying at a certain temperature, the total pressure of 10 to the power 5 Pascal iodine vapor. What is iodine vapor? Iodine vapor is I2. Contains 40% by volume of I atoms. I atoms का मतलब simple I है. कितना होता है? 40% होता है. That means we have an equilibrium. पहले equilibrium किसके बीच में? You have I2 gas. It is an equilibrium with 2 iodine. This is also gas. ठीक है. Now this particular 2I, it is 40% by volume, and I2 it will be 60% by volume. Make sense? Yes or no, please tell me. Yes, sir. ठीक है. Now अब ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा. If we have one gas, अगर आपके पास सिर्फ एक गैस है, that means whatever pressure is present inside the system will be due to this A gas. If you have only one gas, then total pressure is due to A. बट मान लीजिए आपके पास A है 50% और B है 50%. So 50% pressure is due to A और 50% is due to B. Similarly, total pressure का 50%, sorry, total pressure का 60% will be for I2 और 40% किसकी वजह से होगा? Will be because of 2I. Make sense? ऐसा प्लीज नहीं? बात समझ में आ रही है? क्या ख्याल है? Yes, sir. 60% of the total pressure will be because of I2 and 40% of the total pressure will be because of the iodine atoms. So total pressure is 10 to the power 5 Pascal. So pressure due to I2 will be equal to 10 to the power 5 multiplied by 60 upon 100. And here pressure due to I will be equal to 10 to the power 5 multiplied by 40 upon 100. ठीक है. So इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. This will be written as 0.6 into 10 to the power 5 Pascal. और इसको हम क्या लिख सकते हैं? We can write this as 0.4 into 10 to the power 5 Pascal. ठीक है, ध्यान से देखिए जरा. Then they are asking you the KP. KP निकालना है. So again, product upon reactant, the pressure of product, that is I, is squared because we have the stoichiometry 2 divided by the pressure because of I2 molecule. So pressure because of I is how much? It will be equal to 0.4 into 10 to the power 5 Pascal. It will be squared divided by 0.6 into 10 to the power 5 only Pascal. Now we can calculate this value. 0.4 into 0.4 into 10 to the power 5 into 10 to the power 5 whole divided by 0.6 into 10 to the power 5. यहाँ पे पास्कल स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ पास्कल है, तो पास्कल एंड पास्कल स्क्वायर, वन ऑफ द पास्कल विल बी कैंसल्ड. अब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? देखिए,
10 to the power 5 will cancel 10 to the power 5. 0.4, 0.4, यहाँ पे 0.6 है. So we can cancel a bit. 0.2 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 and this will be 0.2. तो बेसिकली आपके पास क्या बचा? You have 0.4 और 0.2 को दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, then you will have 0.08 divided by 3 into 10 to the power 5. So I can write this as 0.3 है यहाँ पे. I can write this as how much? 8 by 0, 0.8 by 3. 0.8 by 3 यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 into 10 to the power 3 divided by 3 divided by 10, 3 by 10. ये हो जाएगा आपके पास 8 divided by 3 into 10 to the power 4. अच्छा, पास्कल इज रिमेनिंग. पास्कल पास्कल आता रहेगा यहाँ पे. पास्कल 8 by 3, 3 how many za? 2 za, 3 2 za 6. So remainder is 2.0. Again 3 6 za 18, 2 2 2. So 2.67 into 10 to the power 4 Pascal would be the answer for KP. Make sense? Yes, आया समझ में? Yes. Yes, sir. Copy this down. Raise your hand once you're done. Waiting for Amna and Rishita. Right, next. See, you can lower your hands. The equilibrium reactions that we are having, they are classified into two different types. Equilibrium reactions. ठीक है, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट कैटेगरी इज, एक सेकंड रुक जाइए, इसको बना लेते हैं. इक्विलिब्रियम रिएक्शन में एक है होमोजेनस एंड द अदर वन इज हेटेरोजेनस. ठीक है. होमोजेनस रिएक्शन वेरी इजी. होमोजेनस इक्विलिब्रियम अगर कोई बोले व्हाट इज होमोजेनस इक्विलिब्रियम, सो दीज आर इक्विलिब्रियम in which all species are in same phase. phase का मतलब state है ना. all the chemical species will be in liquid or all will be in solid or all will be in gas. Those are homogeneous equilibrium ना, ऐसा equilibrium. heterogeneous is equilibrium in which species are in
different phases. ठीक है, चलिए ये तो दिस इज जस्ट लाइक डेफिनेशन, एक मार्क्स का आ जाएगा कभी, लाइक व्हाट इज होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, व्हाट इज हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, आप यू कैन राइट इट डाउन, और कोई कंसेप्ट इसका लिख देना नहीं है। देयर इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, व्हिच इज नोन एज रिएक्शन कोशेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज नोन एज रिएक्शन quotient. A reaction quotient has the expression same as the equilibrium constant. ठीक है, बिल्कुल वही एक्सप्रेशन होता है, बट the concentration that we are writing there, it is not the equilibrium concentration. That is, ध्यान सुनिएगा, for example we have a reaction AA plus BB which is in equilibrium with CC plus DD, ठीक है। now the reaction quotient which is given as Q है ना, क्यू सी क्यू पी दोनों ही हो सकता है, क्यू इन जनरल अगर हम बोले तो इट इज फॉर कंसंट्रेशन, इट इज सेम थिंग, concentration of C to the power C, concentration of D to the power D, divided by concentration of A to the power A, divided by, into concentration of B to the power B. But the main difference is the concentration that we are writing here for A, B, C, D are not the equilibrium concentration. ये equilibrium state का expression नहीं है, ठीक है। रिएक्शन कोशेंट, दिस रिएक्शन कोशेंट, इट इज जस्ट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, नॉट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट at equilibrium will give you a equilibrium constant. Product upon reactant at any other state, आपने रिएक्शन को स्टार्ट करा है, रिएक्शन अभी चल रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर नॉट इक्वल राइट नाउ, फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर, बैकवर्ड रिएक्शन इज लेसर, ठीक है। सो एट दोस टाइम्स प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर आप डिवाइड करेंगे, देन दैट विल गिव यू रिएक्शन कोशेंट. So please, the most important thing is the concentration that we are mentioning here. बिल्कुल इसको ना 10 बार 20 बार रटते रहिए इसको बैठ के. It's very important. The concentration of A, B, C, and D are not equilibrium concentration. Are not equilibrium concentration. At equilibrium, what will happen? At equilibrium, the reaction quotient it becomes equal to the equilibrium constant. ठीक है, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, Q की वैल्यू K के बराबर हो जाएगी, Q की वैल्यू K के बराबर हो जाएगी. बात समझ में आ रही सबको? यस नो प्लीज समझी? आमना, खदीजा, निशिता, हाँ जी बताएं. Yes, sir. Yes, sir. आम है ना, ठीक है, चलिए लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया क्या, या आर यू राइटिंग? लेट मी नो इफ यू आर नॉट डन. Done, sir. ठीक है. नाउ अभी हम यहाँ पे ना, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, सिर्फ समझिएगा. लेट अस सपोज वी हैव a reaction which is reversible. A can produce B and B can also produce A. The equilibrium constant has been given as 1.5, or you can write it as 3 by 2. You can write it as 3 by 2. ठीक है. So product upon reactant की concentration, if this ratio, the ratio of product upon reactant, if it does not reaches 3 by 2, then the reaction will not stop. Reaction stop नहीं होगा. ठीक है, चलिए. So let us start with 5 moles of A. How many moles of A we are having? 5 moles of A and 0 moles of B. So at this particular point, we can write Q. ठीक है, आपके पास देख लिया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, देख लिया सिर्फ, है ना. प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट will be equal to 0 upon 5, which will be equal to 0. Make sense? Yes or no? Please tell me. बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? अरे बोलो Yes, भाई. sir. ठीक है. Now what will happen at this point? We will say that Q is what, Q जो है आपके पास, this is Q ना, it is not equilibrium, so it is Q. Q is less than K. Make sense? Yes or no? Please tell me. K is 1.5 और Q कितना आ रहा है? 0 आ रहा है. बात समझ में आ रही है सबको? Yes or no? Please tell me. ठीक है. Yes, अब sir. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे now what will happen, because we have only A, तो forward A क्या बनेगा, B बनाएगा. ठीक है, A is going to convert into B. Let us suppose 1 mole of a reactant
and we have 4 moles of A remaining, and 1 mole of B has been formed. Now, if I write product upon reactant, we will have 1 upon 4, which will be equal to how much? 0.25. Still, you can see that Q, it is less than K. Make sense? Yes or no? Please tell me. बात समझ में आ रही है ना? बोलो भाई. Yes, sir. बोलो भाई, बोलो. Yes. Yes or no? Yes, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगेन A विल कन्वर्ट टू, देखिए अभी आपके पास B उतना नहीं आया ना, B को बढ़ाना है, B और आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा? हियर यू विल हैव 1 मोर, 1 मोल और घट जाएगा A का. सो यू विल बी हैविंग 3 मोल्स ऑफ A एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ B? 2 मोल्स ऑफ B. Product upon reaction will be 2/3, which will be equal to how much? Which will be equal to, tell me, 0.67. 666 होगा, लेकिन 67 आप लिख सकते हैं. Here also we will say that Q is less than K. Again, what will happen? एक और मोल कम होगा, and you will have 2 moles of A remaining, and 3 moles of B will be there. Right now we are having 3/2, which is equal to how much? 1.5. At this point, Q it is equal to K, and once the equilibrium has been reached, you इसके आगे आपका concentration change नहीं. Equilibrium has been, A will be getting converted to B will be getting, and this particular point, reaction will stop. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Sir, can you repeat that? Am I audible, Your guys? voice is Hello. breaking. From where to 3? From Q Am I audible? is less than 3 and 2. The third one. Wait a second, wait a second. I'm going to read a few lines. Just tell me whether I'm audible correctly or not. Equilibrium reactions can be divided into 2 categories: homogeneous equilibrium and heterogeneous equilibrium. Homogeneous equilibrium is the equilibrium in which all species are in same phase. Heterogeneous in which all species are in different phase. Am I audible properly? Yes, sir. ठीक है. ये तो फिर हम दोबारा समझाते, फिर से मेरी आवाज नहीं जाती तो फिर नहीं फायदा होता है ना. ध्यान से देखिए. सो फ्रॉम 2 3 ना प्रशिता? 3-2. 3 2. Okay, fine. So when we were having from 4 1, 1 mole of A again converted to B, so the concentration of A is reduced. It has gone to 4 moles. Then once again it has gone to 3 moles. In 3 moles, we have the product upon reactant as 2/3, which is equal to 0.67. Still, Q is what? Not equal to K. So the reaction will be still proceeding. And here, because K is greater, so reaction किधर जाएगा? It will be going forward. We need more amount of B. B आपको फिर क्या होगा? A will again react. So 1 mole of A will be reduced. 1 mole of B will be increased. And now you are having 3/2, which is equal to 1.5, which is the equilibrium. So at this particular point, the reaction will not stop. The reaction will keep going on, but the concentration will not change. Concentration will be constant because the forward reaction and backward reaction will be occurring in the same speed. Make sense? Yes or no? Please tell me. समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है. एक तो ये चीज हो गई है ना कि आप Q से आप पता लगा सकते हैं that, see, if Q is less than K, Q क्या है? Is less than K, then आपको Q को K की तरफ लेके जाना तो फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक है. अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन आएगा, if Q is smaller than K, Q बड़ा है और K छोटा है, ठीक है, तो you have to bring the Q back. ठीक है. K को आपको इधर लेके जाना तो बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है. जिधर बड़ा है आप उसकी तरफ लेके जाएंगे. खैर वो सारी चीजें हम लिखा देंगे. You don't have to worry. Now another thing is that the value of K, it also signifies something. Let us suppose if we have a value of K that is equal to 10 to the power 5. Now, what does that represent? It represent, what does K represent? K is representing the concentration of product divided by concentration of reactant. ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा. What my value is saying, my value is saying for 10 to the power 5 molecules of product, I have 1 molecule of reactant. Make sense? Yes or no? Please tell me. यही तो मतलब हुआ. बात समझ आ रही है? 10 to the power 5 upon 1 ही Yes. तो होगा, है ना? That means if I have 1 reactant molecule, then I am having what? I am having 10 to the power 5 moles of product. That means the amount of reactant will be negligible in these cases when K is very high. उसी तरह से, if let us suppose K it is equal to 10 to the power, it is equal to 10 to the power minus 4, then this will be equal to 1 upon 4. ठीक है. So you can say that
Here in this case, for 1 mole of product, I have 10,000 moles of reactant. Now, in this case, you will say कि product तो बना ही नहीं, so reaction has not even started. When we are having all the products, then we will say that the reaction is completed. Then we will have something in between. For example, you have, let us suppose, 1/100, है ना? तो for each mole you have 100 moles of B. ठीक है? So now you will write applications. हम सारी चीज समझा चुके हैं, अभी हम सिर्फ लिखते जाएंगे, आप लोगों को समझ में आता जाएगा, ठीक है? You write here applications of equilibrium constant. Number 1, prediction of extent of reaction. Prediction of extent of reaction, ठीक है? यहाँ पे आपके पास K है, and we will divide this into 3 different levels. सही से नहीं बनता ना। See here, if let us suppose K is less than 10 to the power minus 3, यानी कि K क्या है? Less than 1/1000. Then in this case you can say that reactant बहुत ज्यादा है, product कुछ भी नहीं है. So reactants will dominate at equilibrium. Reactants dominate at equilibrium. And we can also say that reaction hardly takes place. Reaction हो ही नहीं रहा है. Reaction hardly takes place. ठीक है? Next is other extreme. We can say that where K is greater than 10 to the power 3. ठीक है? That means the value of K is greater than 1000/1. As you can see, the product is very much high. So we will write here products dominate at equilibrium. And we will say reaction goes for completion. Reaction goes for completion. Reaction is completed. ठीक है? Another case is जब आपके पास K is in between 10 to the power minus 3 and less than 10 to the power plus 3. Now, in this case, we will say that both reactants and products are present in appreciable amount. Appreciable का मतलब होता है measurable amount में होगा, है ना? In the first case, when the reactant is dominating, if you want to measure, even measure the product, तब भी आपको वहां पे product नजर नहीं आएगा. See, ठीक है? So you will not even see the product because it is so less. And in the another extreme, when the K value is greater than 1000, then in those cases, what would happen? You will not be able to measure the reactants. Reactant will be so less. Please write this down. Raise your hand once you're done.
Please raise your hand once you're done. Just waiting for Rishika now. Oh, right, the second application. Prediction of direction of equilibrium. So यहाँ पे आपके पास there are three different cases. The case A is when the reaction quotient it is less than K. Then in this case forward reaction occurs. What will happen? The concentration of reactant should decrease and the concentration of product should increase. है ना? तभी तो आपके पास जो reaction quotient है that will increase and it will reach the value of K. The another case would be Q is greater than K. That means यहाँ पे products ज़्यादा है ना? The ratio of product upon reactant is more than equilibrium. Products यहाँ पे ज़्यादा है, numerator is greater. So what will happen? The backward reaction occurs and the concentration of reactant would increase because product से reactant बनेगा and we can write the concentration of product will decrease. C is when the Q it is equal to K. In this case, we will say that equilibrium is achieved and concentration of reactant and concentration of product are constant. They are not going to change in this case. Copy this down, raise your hand once you're done. Raise your hand once you're done writing this question. Raise your hand once you're done writing the question.
चलिए मूविंग ऑन, सवाल देखते हैं, है ना। The value of Kc for reaction is given at a given time. The composition of reaction mixture is A is equal to B is equal to C, that is equal to 3 into 10 to the power minus 4 molar. In which direction will the reaction proceed? ठीक है, so ध्यान से सुनिएगा, don't do it, है ना। जनरली बच्चे क्या करते हैं सबसे पहले, पता नहीं। अच्छा, टेल मी, डू यू नो हाउ टू अप्रोच दिस? आमना, खदीजा और ऋषिता, एनीवन? किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या करना नहीं करना? नहीं, हाँ जी बताएं। टेल मी यस और नो। यस आमना, एनी आइडिया हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? यस आमना, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। No, sir. नो। ऋषिता, व्हाट अबाउट यू? No, sir. Is all of them are equal, right? So will there be a reaction? विल देयर बी अ रिएक्शन, है ना। बहुत अजीब ही सवाल है बिल्कुल, है ना। तो जनरली ठीक है, आप ऐसा कुछ भी सोच के आप सोचेंगे कि यार क्या ही करें हम, ठीक है। सो यू विल सी कि चलो ठीक है, केसी का हम लोग को फॉर्मूला पता है, केसी निकालते हैं। केसी कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। Now concentration of B is 3 into 10 to the power minus 4. C is 3 into 10 to the power minus 4. And concentration of A is also 3 into 10 to the power minus 4. I will square it and this whole thing will cut. And फिर Kc is equal to 1 आ जाएगा. It will be like, wait a second. पर Kc तो यहाँ पे 2 into 10 to the power minus 3 दिया हुआ है. But Kc आ कितना रहा है? If I do the calculation, tell me guys. आमना, खदीजा and One. रशिता, 1 आ. How come? There is nothing wrong in the calculation ना. Please check once. कुछ तो हमने ऐसा किया नहीं है ना, खेल कूद तो नहीं कर दिया हमने। देखिए जरा, क्या ख्याल है? Both of them are -1, -4. हाँ, तो 10 to the power No, minus sir. 4 into 10 to the power Yeah, minus we 4. didn't do. Yeah, it's right. सो क्या हो गया फिर? अब यहाँ पे आती है वर्ड्स। वर्ड्स है ना, द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स। एवरीथिंग इज फाइन, बट इफ यू रीड दिस लाइन, at a given time the composition of reaction mixture is concentration of A is equal to concentration of B is equal to concentration of C is equal to itna. They never said, what I am saying is very important, please listen very carefully. In the question they never said that this concentration is at equilibrium. Yes or no? क्या उन्होंने बोला? That they are saying at a given time, at some time, not at equilibrium ना. Make sense? Yes or no? आमना, खदीजा and Yeah. रशिता, Yes, है sir. ना। So what we calculated was not actually Kc, because Kc is only and only defined at equilibrium. At other cases, concentration of product divided by reactant is defined as, क्या बोलते हैं उसको? बोलो भाई, अभी तो सीखा हमने। What do we call that? Q. 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 Very nice. ठीक है, तो Q हमारे पास आया है कितना? 1 आ गया। ठीक है, हमारे पास Q आया है कितना? 1. Now we will compare Q and K because they're asking, जैसे ही पूछेगा डायरेक्शन, then you will think of these three cases. इन तीनों में से कुछ होगा, तो Q चाहिए हमको, है ना। तो Q चाहिए, so Q is 1 and K it is equal to how much? 2 into 10 to the power minus 3. So which is greater? Q is greater or K is greater? Q. Q is greater, है ना, because minus 3 यहाँ पे. So Q is greater than K. So what will happen? In which direction? Forward या backward? बोलो भाई। Forward. अरे देख के बोलो। देखिए, सुनिए, आप ऐसे समझिएगा ना, ऐसे समझिएगा। Backward. हाँ, बैकवर्ड थोड़ा सा ना हम Plus आपको बता K. देते हैं किस तरह समझना है, किस तरह से। आपके पास के यहाँ पे है ना, क्यू अगर ज्यादा हो गया तो इधर होगा, है ना। क्यू अगर ज्यादा हो गया तो इधर होगा, और क्यू अगर कम हो गया तो इधर होगा। ठीक है, क्यू अगर ज्यादा हुआ तो क्यू को आप खींच के लाएंगे के की तरफ। यू विल ब्रिंग द क्यू डाउन टू के। तो कैसा बैकवर्ड आ रहा है? बैकवर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बैकवर्ड? अरे बोलो भाई। Yes, sir. एंड इफ क्यू इज स्मॉलर देन के, है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा ना नंबर लाइन के हिसाब से, तो फिर क्यू के क्या लीजिएगा, खींच के की तरफ लाइएगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है।
कैन सी Yes, दैट? sir. ठीक Yes, है, तरह sir. से याद रखिए। ठीक है, तो इस तरह से याद रख जाएगा आपको, है ना, कि क्यू अगर आगे भाग गया तो उसको पीछे खींच खींच के लाना है, क्यू अगर पीछे रह गया तो उसको आगे खींच के लाना है। पीछे खींच के ला रहे हैं अगर, इफ यू आर पुलिंग इट बैकवर्ड, यू हैव टू पुल द क्यू बैकवर्ड। और क्यू अगर कम है तो यू विल पुल द क्यू फॉरवर्ड। तो वही रिएक्शन। ठीक है, याद करने का तरीका है, लॉजिक मतलब ऐसे केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, है ना। क्यू इज ग्रेटर देन के, दैट मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसे लिख देते हैं ना हम लोग, अच्छा लगेगा। रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मेक सेंस? इस प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. अगला सवाल। राइट द क्वेश्चन, रेज योर हैंड। Raise your hand once you're done writing the question. You don't have to solve it, guys. Just write the question and then I will do it. I will explain it. Waiting for Amna and Khadija.
आमना है खदीजा, जल्दी लिखिए, सवाल ही तो लिखना है। आमना एंड खदीजा। अरे बाप रे, कितना टाइम लग रहा है आप लोग को। जल्दी लिखिए जल्दी, खदीजा जस्ट वेटिंग फॉर यू नाउ। चलिए हम देखिए अब। सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है, बोला है उन्होंने कि a mixture of 1.57 mole of N2, H2 and NH3 is introduced in a 20-liter vessel at 500 Kelvin temperature, ठीक है भाई। At this temperature, equilibrium constant of Kc is given as इतना। Is the reaction mixture at equilibrium? If not, what direction? बस वही बताना आपको, है ना। अगर रिएक्शन मिक्सचर इक्विलिब्रियम में होगा तो क्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, एंड क्यू एंड के विल बी इक्वल, एंड इफ दे आर नॉट इक्वल देन वी कैन प्रेडिक्ट इन एट व्हाट डायरेक्शन द रिएक्शन विल गो। ठीक, बट फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज। द स्पीशीज दैट वी आर हैविंग इज N2, दे हैव गिवन अस द मोल एंड दे हैव गिवन अस द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, सो हम लोग मोलैरिटी निकाल सकते हैं यहाँ से। सो फॉर N2 वी हैव 1.57 मोल डिवाइड बाय 20, फॉर H2 we have 1.92 moles divided by 20, and for NH3 we have 8.13 mole divided by 20, ठीक है। and we can calculate the Q now. Q will be equal to how much? Product upon reactant, product is NH3, तो लिख लेते हैं Q होगा आपके पास NH3 का स्क्वायर डिवाइड बाई N2 का स्क्वायर, N2 का स्क्वायर नहीं, N2 का स्क्वायर नहीं होगा, माय बैड, डिवाइड बाई H2 का Q, ठीक। So now we can plug in the values. NH3, NH3 is 8.13 divided by 20 multiplied by 8.13 divided by 20 whole divided by concentration of N2 is 1.57 divided by 20 multiplied by H2 is 1.92 divided by 20 into 1.92 divided by 20 into 1.92 divided by 20. So there are plenty of 20s which will be cancelled. This 20 will be cancelled, this 20 and this 20 will be cancelled. बाकी दोनों 20 को हम लोग ऊपर भेज देंगे, है ना। Both the 20s will go down up because denominator of denominator is numerator. We'll have 8.13 into 8.13 into 20 into 20 divided by 1.57 into 1.92 into 1.92 into 1.92, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करना है आप लोगों को, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि भाई क्या ही है ये, कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। सो व्हाट वी विल डू, थोड़ा हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे, है ना। वी विल डू सम अप्रोक्सीमेशन बिकॉज सी दे आर नॉट आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ क्यू, ठीक है। दे आर नॉट आस्किंग यू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ क्यू, वो पूछ ही नहीं रहे। दे आर आस्किंग कि आप क्यों, हम वाई वी आर हैविंग क्यू, बिकॉज इफ क्यू इज इक्वल टू के तो फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर नहीं इक्वल हुआ देन वी कैन प्रेडिक्ट अबाउट द रिएक्शन का डायरेक्शन, ठीक है। तो 1.9 को ना हम 2 ले ले रहे हैं, ठीक है। 1.9 को हम क्या ले ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं, इधर कम कर रहे हैं, नहीं नहीं ज्यादा कर रहे हैं इधर ना। आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यूज हियर, आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू 1.9 से 2, ठीक है। चलिए खैर, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 टेंजा, सही है। क्या ख्याल है ना। अप्रोक्सीमेटली 10 हो जाएगा ये, अगर इसको 2 ले लेते हैं हम। दिस इज ऑल्सो 2 टेंजा, मेक सेंस है सोनो प्लीज टेल मी, क्या ख्याल है, बोलिए। कोई Yes, दिक्कत sir. तो नहीं है ना, अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं बिकॉज वी डोंट नीड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ क्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए हमको, है ना। ठीक है, अच्छा वट एवर वैल्यू वी आर गेटिंग उसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेंगे, वी विल डिक्रीज द, जो हम लोग को वैल्यू मिलने वाला है ना वो थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा, बिकॉज हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को हमने बढ़ा दिया। हाँ, तो हम लोग को जो वैल्यू मिलने वाला है, डिनोमिनेटर को हमने बढ़ा दिया है, तो वैल्यू जो मिलेगी वो थोड़ी सी
दिस पर्टिकुलर वैल्यू 2 तो क्या द वैल्यू वी आर टेकिंग तो बढ़ाया हुआ है, तो जो ओरिजिनल होगा दैट विल बी अ बिट स्मॉलर। ठीक है, अगर 1.92 लेके रहते हैं तो 9 पॉइंट समथिंग आता है ना। चलिए ठीक, वो हम बता देंगे क्या है अप्रोक्सीमेशन, आप लोग को करते करते ही समझ में आएगा, ऐसा समझ में आएगा। नेक्स्ट 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 व्हाट वी विल डू ना, क्या करते हैं हम, थोड़ा सा और खेला करते हैं। इसको भी हम 2 अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी हमने बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर में हमने सबको क्या किया, बढ़ा दिया, न्यूमरेटर में हम सबको घटा दे रहे हैं, तो इसको हमने 8 मान लिया, इसको भी हमने 8 मान लिया। ठीक है, और इसको भी घटा देते हैं, इसको मान लेते हैं 1.5 सीधा सीधा। अब अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, तो इट इज व्हाट 64 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1.5 इंटू 2 में 6400 डिवाइड बाई 1.5 को लिख सकते 3/2 इंटू 2, ये कट जाएगा, है ना। सही है, 3 आ जाएगा इधर। सो 6400 डिवाइड बाई 3, ऐसे कुछ है। कुछ तो छूटा नहीं ना, देखिए कितना है आंसर जरा। दिस इज 2133.3 एंड अच्छा, इसको हम लोग इसमें कर लेते हैं। ओ, कुछ छूट गया क्या यहाँ पे, देख लेते हैं एक बार। जस्ट लेट मी चेक, एन थ्री का स्क्वायर, एन थ्री का स्क्वायर ठीक है, एस थ्री का क्यूब, एस थ्री का क्यूब, एन टू एक ठीक है। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। सो आई कैन राइट दिस वैल्यू एज 2.1 इंटू 10 टू द पावर एक दो, 10 टू द पावर 2, ऐसे ही कुछ होगा, ये सुनो। Yes, sir. नाउ दिस वैल्यू इज व्हाट, ग्रेटर देन स्मॉलर देन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंपेयर कीजिए, इक्विलिब्रियम तो नहीं है आई थिंक, उतना तो समझ में आ रहा है हम लोग को। फॉरवर्ड होगा बैकवर्ड होगा, तो यहाँ पे 3 होगा, 2.1 टू द पावर 3 होगा। ठीक है, टेल मी गाइस, ऑब्वियसली आपके पास इक्विलिब्रियम में कितना है, 10 टू द पावर 2, और क्यू में कितना है, 10 टू द पावर 3। सो व्हाट वी विल राइट, क्यू इज ग्रेटर देन के, देयरफॉर रिएक्शन विल, ऐसे लिख रहे थे हम लोग, प्रोसीड इन डायरेक्शन। मेक सेंस, ये सोनो प्लीज सनी। Yes, sir. Please copy this down.
waiting for Khadija and Rishita. Everyone is done. Right, next. ऐसा सवाल अगर और है तो कीजिएगा क्या, एक दो। ये सवाल कीजिए जरा खुद से आप लोग। सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर आपके पास रिएक्शन भी है। Let me know if you need any help, if you get stuck.
Once you're done, you will send the answer in the Zoom chat whether the reaction is going to be in the forward or the backward direction. Guys, let me know if you need any help, okay? अच्छा चलिए उसी का आंसर आया ओके फाइन ऋषिता चलिए लेट अस सी all of you guys at a particular time that means at a particular time है ना that means they are talking about q not k so q will be equal to concentration of NH3 squared divided by the concentration of N2 multiplied by the concentration of H2 cubed. Now at this point the concentration of NH3 has been given as 3 N2 दिया है NH3 0.5 divided by N2 is 3 H2 is 2 so and K is given as 0.061
Right now this will be equal to how much? 0.25 जी बताएं। अच्छा इनटू 2 एक और X होगा। will be, yes. हाँ ठीक है, थैंक यू। डिवाइड बाई 3 2 6, 6 4 24। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कर लें, ठीक है कर ही लेते हैं, विल बी 25/2400, है ना। सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेट, अगर इसको हम काटते हैं तो काटते हैं, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.01। कितना ही आ रहा है? 0.01 क्यू। टेल मी गाइस। Yes, sir. है ना, अप्रोक्सीमेटली 0.01। सो वी कैन से दैट क्यू इज लेस देन की, है ना, की ज्यादा बड़ा 0.06 है। सो लेस देन है तो इसको आगे खींच के लाना पड़ेगा, तो फॉरवर्ड हो जाएगा ये, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। तो देखिए आप, सवाल से छूटा तो जवाब है कि नहीं, बताइए। है ना, आमना खदीजा रशिदा, इतना सवाल में मेहनत लगा होगा लिखने में, टाइप करने में, आप लोगों को खुद लिखने में, उससे जल्दी तो जवाब आ गया। आंसर इज फार इजियर। ठीक है, एंड द बेस्ट थिंग Yes. इज दैट आपको अप्रोक्सीमेशन करना है। हाँ, बट अप्रोक्सीमेशंस में भी देयर आर लेवल्स। अभी आपको शायद अप्रोक्सीमेशंस उतने अच्छे ना हो, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे आप अप्रोक्सीमेट कीजिएगा आंसर देखिए, फिर देन यू ट्राई टू थिंक व्हाट वेंट रॉन्ग इन द अप्रोक्सीमेशन। तो फिर आप धीरे धीरे और सीख जाइएगा अप्रोक्सीमेट करना। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वी विल बी स्टार्टिंग विद द थर्ड एप्लीकेशन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। उसमें भी न्यूमेरिकल ज्यादा है, तो फॉर दैट वी नीड टाइम, है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड आमना, आई हैव गॉट योर टाइम टेबल। 18 फेब हमने आपके चैट में भी लिख दिया, ताकि जब भी आपको हम चैट करें तो हमको याद रहे कि आपका एग्जाम जो है दैट इज फ्रॉम